सो ये जो पूरी यूनिट है हमारी, इस यूनिट के अंदर सो फार वी हैव स्टडीड पॉवर्टी, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट कुछ कुछ इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम पॉवर्टी के बाद में सीधा रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये पूरी यूनिट है, इसमें ये सारे चैलेंजेस है हमारे पास में ना, उसमें से एक चैलेंज हम पढ़ चुके हैं पॉवर्टी, एंड टुडे विल स्टडी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है ना, लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, why it is required, what are the objectives and what areas we cover under rural development, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। what is the meaning of rural development? Now when we talk about the meaning of rural development, so here we have to understand one very important thing is, in Indian economy we have got the concept of rural development. Why we do not have the concept of urban development? This should be the very first question which should come in our mind. Why the chapter called urban development is not there, but rural development is here? So it may has got few reasons, जिसमें से सबसे पहला रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक्चुअली देयर इज नीड ऑफ डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। अगेन सेकंड थिंग, most population lives in rural areas. Okay, and even the rural part of India is, sort of backward in terms of income generation, in terms of infrastructure, इन सारी चीजों में थोड़ा सा जो है वो weak है. And even one very important factor, which is that people are not very much aware of things, and people are not literate enough. When we look at the literacy, then we'll find, as compared to rural people, urban people are more literate. It is perhaps because of the facilities, because more of the schools are there in urban areas, where we have in rural areas less number of schools, or government schools are here in, but then in urban areas even the private schools are also running, although they are profit making institutions, but still they are running, and somewhere they are contributing in the society. Now the trend has started that in rural areas also, that there are many private schools have come up, but ultimately when it is about profit, so then people will prefer to open their institution at the place where they can actually make good money. तो रूरल डेवलपमेंट में परेशानी क्या हो गई, एक बहुत बड़ी, वो ये है कि द इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमिंग अप, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बीन मेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, and in rural areas people see less profit, as in people of rural areas, they do not generate that level of income, so their paying capacity is also less, and hence the investors are not very much interested to invest there. इसलिए अब बात क्या आ जाती है हमारी, कि जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देर आर मेनी, एट मेनी इंस्टेंसेस वी मिस अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, व्हिच इज, डज रूरल डेवलपमेंट मींस converting converting a village into a city. Like in a city is having what? A city is having good roads, a city is having good number of hospitals, shopping malls, industries, okay, like companies. So all these things are, the features of urban areas. So are we planning to convert this village, or can we say this thing, the development of village will take place if we will have all these things herein? अगर ये सारी चीजें यहाँ आ जाए तो क्या इस विलेज का डेवलपमेंट हो जाएगा? सो क्या रूरल डेवलपमेंट का मतलब हमारे लिए ये है कि गांव को हम लोग शहर में बदल दें? Does it what we mean by this? So the very simple answer is no.
एक्चुअली वी डू नॉट वांट टू डू दैट। रूरल डेवलपमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम उस गांव को शहर बना दें और फिर बोले कि हाँ हम लोगों ने डेवलपमेंट कर दिया है। बिकॉज along with the development there comes a destruction as well। जैसे हम लोगों ने बड़ी बड़ी होटल्स बनाई तो हमने पेड़ काटे, ठीक है। तो हम लोग जब रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस ऑफ रूरल एरियाज फॉर द अल्टीमेट बेटरमेंट ऑफ पीपल, betterment betterment of people as well as environment। In last 2-3 decades we have found that urban development took place very rapidly, but then in that speed of development we have actually played with this particular word called environment। And today we are seeing that there are many cities which are having that much of pollution which cannot be controlled। So ultimately what? Yes, we have gained big hotels, big industries, big companies. We are, making a lot of money in those cities, but then the environment is completely destroyed. And now people who were earning lakhs of rupees, now they are spending lakhs of rupees for their health। So we do not want to commit the same mistakes in rural development। That's why we decided that yes, of course, we'll develop the areas of rural, but it won't be just that we are developing the infrastructure or we are bringing job opportunities to villages। We are not only targeting this, but we are also targeting that we have to develop rural areas by developing the people, by working on people, by working for the betterment of people as well as environment। बिकॉज रूरल एरिया की खासियत ही यही है, दैट पीपल प्लस एनवायरमेंट, दिस इज व्हाट वी लुक फॉर। ओके, वी ऑल्सो कॉल इट, अगर विलेज की हम लोग बात करें तो विलेज में दो ही चीजें पॉपुलर है ना, या दो चीजें ही विलेज को बनाता है, व्हेन पीपल प्लस पीपल, दिस इज व्हाट इज अ विलेज। ओके, the village where people are well-being of people, well-being of people, okay, and also well, ठीक है। सो वी वांट वेलबींग ऑफ पीपल, ठीक है, और जहां पर जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी चीजें जो है वो लोगों की पूरी हो रही है। वी आर नॉट टारगेटिंग कि रूरल एरिया में हम लोग मोबाइल की फैक्ट्री लगा दें, ठीक है, दैट्स नॉट रूरल डेवलपमेंट। हम उस गांव से हाईवे निकाल दें, दैट्स नॉट रूरल डेवलपमेंट। but utilizing the abundant resources of village, utilizing the abundant resources of village for the betterment of its people, for the betterment of its environment। okay, so this environment is something we do not want to compromise with, क्योंकि हम लोगों ने अर्बन एरियाज को तो डेवलप करके डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑलरेडी। अब रूरल डेवलपमेंट में हम ये मिस्टेक वापस से कमिट नहीं कर सकते। ओके, नो परहैप्स जो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें शायद आपको किताबों में पढ़ने को ना मिले, बिकॉज दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, और I might have referred many other literature material or articles to make this sort of statements। okay, पर reality तो यही है, and probably you will also agree with the same thing। अब क्या होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो सारी चीजें हम लोगों ने बोली है क्या ये चैप्टर यही बात करने वाला है, ठीक है। सो दिस यू हैव टू मैच। ओके, सो लेट मी इरेज दिस एंड नाउ लेट्स प्रोसीड। ओके, नाउ रूरल डेवलपमेंट इज व्हाट, it is about the process of improving quality life and economic well-being of people living in rural areas। तो ये तो हमारी एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई है ना, जो सिलेबस ओरिएंटेड है, लेकिन इस डेफिनेशन में हम लोगों ने पीपल के साथ में एक चीज और क्या जोड़ दी है, विच इज एनवायरमेंट।
ओके, आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम जो रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ओके, सो इट शुड बी सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल कब होगा? जब हम वो सारे डेवलपमेंट रूरल एरिया में करेंगे बाय कीपिंग दिस थिंग इन माइंड दैट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एनवायरमेंट। ओके, नाउ सिंस वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, so here we have focused very, we have emphasized actually on the economic well-being of people. Means we are very worried about the economy of rural houses, that we have noticed that there are many rural houses which are not even be able to get the 2 square meals. तो ऐसे में इकोनॉमिक वेलबींग की भी हम लोग बात करते हैं, that how we can generate sources of earning for rural people or for the people who are residing in rural areas. Because the other side, one problem which we are facing is that people in search of jobs, they have started migrating from rural areas to urban areas. Now they are migrating to urban areas. Now if they'll migrate for urban areas, तो होगा क्या? तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? So this is a big question. So this is a big question. तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? Then it's a question mark. अब समझे इस तरह से, है ना? If people will start migrating to urban areas, धीरे धीरे करके गांव खाली हो जाएंगे और अर्बन एरियाज में भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली ये इसके लिए भी नुकसानदायक है, अर्बन एरियाज के लिए भी। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कमिंग टू फ्यू पर्टिकुलर प्लेसेस, तो वो भी खतरनाक है ना, वो भी खतरनाक है। तो इसलिए so that people do not migrate from rural areas to urban areas, इसके लिए हम लोगों को रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ये चीज हो गई। थोड़ा और समझते हैं इसको। नाउ हु आर इन्वॉल्व्ड, है ना? तो जनरली हम लोग देखते हैं, दिस इज अ बेसिक नोशन, दैट रूरल एरियाज में दो तरह की एक्टिविटीज चलती है, वन इज फार्मिंग एक्टिविटीज एंड द अदर्स आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। Okay, we do not have big IT companies in rural areas, but then there are farming and non-farming activities going on. Now, why this rural development is required? तो हम लोगों ने प्रीवियसली एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें we studied about new economic policy which came in 1991, and there we have witnessed that rural part of India was being ignored. Okay, और जब वो इग्नोर हुआ, किस तरह से इग्नोर हुआ कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो गांव की तरफ आने के बजाय, बिकॉज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज सफरिंग इटसेल्फ, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा बचा ही नहीं था, सो ऑल दे डिड इज दे प्राइवेटाइज्ड, है ना, फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें आ गई। तो हमारा ध्यान इंटीरियर से हटकर बाहर की तरफ चला गया, इनर वर्ल्ड से हम लोग आउटर वर्ल्ड की तरफ देखने लग गए, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर सर्च टू मेक मोर एंड मोर मनी बाय एक्सपोर्टिंग, ओके, और बाय प्राइवेटाइजिंग मेनी एरियाज। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ओवरऑल जो है वो कम होने लग गया। देयर वी फाउंड दैट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नीड, कि अब जरूरत है। रूरल एरिया में 3/4 पॉपुलेशन रहती है, दिस इज ऑब्वियसली, है ना। देन लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, हमारे पास में रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। However, employment opportunity से अलग मैं थोड़ा सा इसको देखता हूं, है ना। You can also make your opinions by reading a lot. Okay, ये जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं, ये +2 की जो इकोनॉमिक्स है या एनसीईआरटी बेस्ड जो इकोनॉमिक्स है उसके पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बट देन रूरल डेवलपमेंट इज सच टॉपिक जहां पर हम अपने आप से भी चीजों को एक्सप्लोर करके नए नए इनपुट्स दे सकते हैं। बिकॉज जब चैप्टर का नाम ही डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट कैन नॉट बी कांस्टेंट, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। तो डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब जो ऑनगोइंग चीजें हैं उन पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और रूरल डेवलपमेंट को इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम द बुक, वी हैव टू स्टडी रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम द विंडो, है ना। विंडो से हमारा मतलब क्या है? बाय लुकिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ देखो, बाय विजिटिंग विलेजेस, बाय टॉकिंग टू द पीपल ऑफ विलेजेस,
by talking to the people who are actually working for the development of villages. There are n number of case studies available. Even the Indian economic development video library that I have shared with you, it has also got certain number of videos, है ना? उन videos में या case studies हैं हमारे पास उसमें. Two case studies I would like to mention here. One case study was of Pansari village, है ना? Pansari or Pansari, whatever they pronounce it, Pansari village. And then the other is Hivre Bazaar. Hivre Bazaar. So Pansari village is in Gujarat and Hivre Bazaar is in Maharashtra. So these two village case studies also you can see. और आप देख सकते हो कि वहां पर जो रूरल डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ. So that will give you the actual image, the actual idea that how exactly it took place, है ना, किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो बनी. So it will give you a more depth about these things. Okay, so this you must go through these both. Okay, you are already having the PDF of Indian Economic Video Library. If you are not having, then you can text me. Okay, and I'll be giving you. Okay, now the fourth point which we see is the share of GDP. Share of agriculture in GDP is very low. Okay, and why is it low? Although the modern economists, they say that if the share of agriculture in GDP is lower and lower, that the company then the country can be counted as more developed countries. So that, think about it. Although they do not want to say that agriculture should be declined, but the problem with agriculture is the growth of agriculture as compared to tertiary sector or industrial sector is quite less. Not even just in India, but throughout the world. But in the case of India, by developing agriculture, we can actually ensure welfare and well-being of our country. Okay, we are not targeting just for GDP, but then more than GDP, what is more important is the welfare of people. Okay, so welfare of people can be assured if we will develop our agricultural sector more. Okay, so this is what government should also think about it and should work in this direction. Okay, although in present scenario, as we can see that slowly and slowly our focus is more on GDP growth rather than on development. This has been noticed everywhere. Okay, so this is it. So this is why we have studied here in what is rural development, and second is why there is need to develop the village. Okay, now the last point I would like to mention here is, according to the Planning Commission, okay, 25.7% of rural people lived below poverty line. This is census 2011-12 says that 25.7% people living in rural areas are actually below poverty line. Means seriously the rural areas needs economic development, and this is what we will study in this chapter, that how actually we can do this. At the end of the chapter, I would also like to take your suggestions, that what you want to suggest to the government so that they can overcome the problem of poverty in rural areas. Okay, so this input I would like to take from you. Okay, so next we will study more about rural development in the next lecture.